Okay, let's get started, guys. So now big data challenges. Next topic is big data challenges. Now, what kind of challenges we have in big data? Let's observe that. ठीक है. So बहुत सारा इसमें पैरामीटर है, बहुत सारा challenges है, but we will highlight what is the critical one. Okay, not all of them. We'll not be able to touch base maybe all of them, but what are the critical one which is very important for all of us, right? How fast the data is generated. Now, a couple of challenges are there. Let me bring up the notes also so that you can relate to this also. ठीक है, लेके आते हैं नोट को भी, इसमें हम लोग कैप्चर करते रहते हैं और सारा नोट यहाँ पे मैं बनाता रहूंगा. ठीक है, और ये सारा भी शेयर कर दूंगा. नो वरीज गाइस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, not required. Now, first thing is here, big data. Okay, now big data challenges. Big data challenges. What are the type of challenges we face typically? आप ही सोचो, अगर डेटा बहुत बड़ा है, what kind of challenges we will be facing? First point is this: what type of data challenges we'll face? First is capture, storage. ज़्यादा कुछ नहीं. I'll share that also. Definitely इसका भी outline होगा. So just capture this. Go back here. Search big data challenges. Nothing else, guys. जो भी इमेज आ रहा आप चेक कर लो. आर्टिकुलेट तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं है. सो लुक एट दिस व्हाट द बिग डेटा चैलेंजेस आर. सो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस ओनली न्यू स्क्रीन. ओके, ओपनिंग इमेज इन न्यू टैब. एनफ. तो लुक एट दिस. सो किस तरह का चैलेंजेस है? पोर डेटा क्वालिटी. नाउ लेट मी कैप्चर दिस आल्सो फॉर रेफरेंस पर्पस. Copy it, and I'm keeping all the links here in this notepad, so it will be helpful. Now, what type of challenges are there in the big data, guys? What type of challenges यहाँ पे बोल रहा? Capture, storage, बहुत सारा है. Look at this, how many, right? There's so many challenges. Now, first thing is poor quality. One of them. Issue in scaling, fine, but issue is scaling. Okay, if you have a size, and even if you wanted to make it much more larger or capture much more larger, it is really challenges to manage that distribution of the data which is getting increased, right? तो एक problem है. ठीक है. Incorrect integration. Okay, इसको और deep में समझने की कोशिश करेंगे. We'll try to understand further. Real time data का problem होता है. Lack of expertise, right? And then security and privacy. Lack of security. Okay, real time data, real time hai, but how come it is a challenge to manage it, right? To manage it is a challenge. Now, what type of challenge we need to go further? Other than that, I know mostly if I highlight, capture का problem होता है, storage का problem होता है. यहाँ पे storage है, anywhere storage is there or not? Storage is there, integration no, storage नहीं है. देखिए, I'll emphasize, think from a layman. No, don't need to go to this kind of very specific, because मैं आपको जो भी highlight करूंगा उसको मैं I'll be able to give you the background also. So first is capturing issue, right? First is that capturing issue. Second is what? Storage issue. Third is what? Curation issue. Okay, हाउ एक्जैक्टली विल प्रोसेस. स्टोरेज मतलब आप समझ गए, डेटाबेस का जगह नहीं है. क्यूरेशन मतलब कैसे, हाउ विल क्यूरेट. डेटा तो बहुत सारा है, जो भी चाहिए हमें. If you have 100 columns, do you require that 100 columns for your analysis? You don't need it, right? You need only certain columns for that analysis. So you will not use that 100 column for analysis. On that time, this kind of context required. Curation में काम लगेगा. Another is search. अगर if you have a big data, it's very difficult on the search part. When you search that particular data, it is very difficult. Okay, that how exactly you search that information, what are the process you follow, how you'll search the exact data you required. On that time, this is a very critical aspect altogether. Another is analysis. Okay, if you have to analyze that data, analysis or analyze the data. When we have to analyze the data, curate the data, search the data, analyze the data, store the data, capture the data, these all comes under challenges of big data. Typically, these all comes under challenges of big data, guys. Fair enough. Another is okay, analysis, storage, analysis. This is fine. Then transfer.
Other thing, if I have to, these are also there, these are additional parameter you can mention. Analysis of data. Why analysis? Because it's a huge data, right? How you will even sink it down? Because analysis में 10 तो चीज तो एक साथ analysis नहीं करेंगे. We'll analyze only certain things together, right? All the things will not analyze never together, right? Analysis of data. So the larger the data, it is very difficult to analyze that data also. ओके उसमें एक है वो आपका डायमेंशनल रिडक्शन. सो इफ यू हैव लार्जर डेटा वी रिड्यूस द डायमेंशनलिटी, देन ऑन टॉप ऑफ द डायमेंशनल रिडक्शन देन वी कैन अप्लाई आवर मॉडल्स और डू आवर एक्सरसाइज फॉर मॉडल बिल्डिंग, राइट. सो एनालिसिस अगर ज्यादा है तो चैलेंज है. ट्रांसफर डेटा स्टोरेज ऑलरेडी कवर कर लिया. ट्रांसफर ऑफ द डेटा वेरी डिफिकल्ट, राइट. डिफिकल्ट मैंने आपको बताया था ना that black hole वाला जो डिस्कवरी हुआ था, that data whatever they capture from across globe, एक साथ 4-5 जगह में वर्ल्ड में वो डेटा कैप्चर हो रहा था एट द सेम टाइम. तो अगर उसको ब्लैक होल करके हाइपोथेसिस को वैलिडेट करना था तो दिस एंटायर डेटा फ्रॉम चिली, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो डेटा को एक जगह में लाया गया, वन सेंटर में ये सारा डेटा को लाया गया. एंड ऑल डेटाज आर टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, जेटाबाइट्स, वेरी लार्ज डेटा. then they merge that data and उसको ये जो ट्रांसपोर्ट करा उसी में बहुत सारा टाइम लग गया, उसको मर्ज करने में टाइम लग गया. ऐसे ही आप थिंक करो, then what kind of challenges would have came here, right? then you can relate this. तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर का एक चैलेंजेस हो गया, उसके अलग से ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ा, एंड दैट विदाउट ट्रांसपोर्टिंग वी कैन नॉट इवन ट्रांसफर दैट मच ऑफ डेटा ऑनलाइन. तो वो एक चैलेंज है. इफ इट इज लार्जर डेटा देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट, विजुअलाइजेशन. बड़ा डेटा ये दिस इज आई फेस. सोचो कोई भी आपके पास एक डेटा सेट है, बहुत सारा कॉलम है, कैन यू विजुलाइज देम? बहुत सारा कॉलम है, 100 कॉलम्स है सोचो, और 100 पैरामीटर्स है. आप उसको किसी भी ग्राफ में डाल पाओगे? किसी भी ग्राफ में आप उसको नहीं फिट कर पाओगे, बिकॉज 100 पैरामीटर्स ही है, आप उसको कैसे फिट करोगे? सो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. विजुलाइजेशन में प्रॉब्लम है. विजुअलाइजेशन, visualization, that's an issue, right? Visualization. Now there is, last but not the least, is security. Security, very this is very critical. These are capturing issue, storage issue, curation issue, search issue, analysis issue, transfer issue, visualization issue, security issue. All these issues comes under this, guys. Okay, so I hope it is clear what kind of challenges comes across. Okay, let me see what comes next. Now challenges are there. What exactly we do with the data, whatever data we receive, what kind of data, what kind of activity we do. अब तो challenges भी समझ गए, लेकिन ये data का होगा क्या? What I am going to do with this data entirely? What I am going to do with this entire data after even mitigating all this problem? Okay, what kind of problems we can solve, right? Now see, इसका क्या होता है? Analysis होता है, various type of analysis होता है, कुछ use cases है. Now you have to study use cases of big data. That's the only thing I can say, use cases of big data. That is what is coming in my mind. So you go here, just search here, use case of big data. Use case of big data, इसको delete कर दीजिए. Use case of big data, right? Now big data, यहाँ पे आप data मेंशन बहुत सारा है. अगर आप use case खोजेंगे 6 big use cases of, आप बोलेंगे कि इतना सारा कुछ किया. Now what you do with that data, what you are going to do? ओके, सो बहुत सारा ऑप्शंस है. ये एक रेफरेंस है, यूज केसेस अवेलेबल है गाइस. यूज केसेस, लॉग एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं. ई कॉमर्स पर्सनलाइजेशन वी कैन डू. recommendation engine, we can build recommendation engine based on that data. Automation candidate or automated candidate placement in recurring, okay. recruiting, sorry, automated candidate placement in recruiting, ये another use case है. बहुत सारा डेटा आता है, there are so many candidate, how exactly I'll use this entire big data concept in recruiting, that is another use case. Insurance fraud detection, इसमें यूज करा जा सकता है. Relevancy and retention of boost for online publishing, these kind of additional sources we can apply this, guys. These kind of additional sources we can apply this entire context overall. Use case of relevancy and retention booster of online publishing.
relevancy and retention boost for online publishing. I need to go through in order to understand this, but पांच at least चार तो use case you can relate, right? Which kind of use cases कहाँ पे हम लोग use करते हैं, ये भी लिंक मैं दे दे रहा हूँ। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारा आपका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। all link will be available guys, all the links will be available. Fair enough? I hope it is clear. Okay. I'll say use case, and this is the okay use case of the data, use case of big data. Fair enough? सेकेंड, तो यहाँ पे आप, मैं नोट भी बना ले रहा हूँ ताकि इसको हम यूज कर पाए। यूज केस ऑफ बिग डेटा। फेयर एनफ गाइस? तो यहाँ पे एक रिलेवेंट रेफरेंस मुझे मिल गया। अनदर इज व्हाट इज, नाउ यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल गाइस, क्या क्या होता है, लॉग एनालिसिस कैसे करते हैं। आप इतना समझ लो कि जहां ज्यादा डेटा है, नाउ एनालिसिस वही है कुछ फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए भी एक इमेज था, किस तरह का एनालिसिस होता है। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एनालिसिस, व्हिच टाइप ऑफ एनालिसिस वी डू, दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, व्हाट टाइप ऑफ एनालिसिस वी डू। तो इसमें बहुत सारा है, जैसे बहुत मोस्ट पॉपुलर एनालिसिस है वॉलमार्ट का, एक है डिस्कवरी इंक्रीज दैट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है एंड बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंसिंग सर्टेन इवेंट। ठीक है, मतलब स्टोम आने वाला है, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट इज गेटिंग इंक्रीज ऑटोमेटिकली, यू विल गेट टू नो। ओके, नाउ अनदर इज दैट now relationship breakup of particular region leading to a certain other factor like divorce count. I'm just giving another example. Okay, these are all use cases available. These are all big data. When we geography level, when we analyze the information, then we will be able to like identify that in this level also the problem comes in, guys. Fair enough? ये भी clear है? Now type of analysis. Now another is type of analysis, descriptive analysis. अब आगे analysis में, ये तो मैंने आपको बता दिया। Now which type of analysis we can do? Simple type of analysis, descriptive analysis. Now this is we need to analyze. The data हो गया, करते क्या है, एक दो use cases are we also able to realize. आप डिटेल में जाओगे और भी डिटेल इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर सकते हो, no problem there. I'm just closing all this. Fair enough. Another is this one, type of analysis. Just आप explore करो type of, okay, टाइप ऑफ एनालिसिस। नाउ व्हिच टाइप ऑफ एनालिसिस वी डू, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 6 टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 6 टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस गाइस, इफ आई कैप्चर इट, पूरा डिटेल में दे दिया गया है टाइप ऑफ एनालिसिस। ये शायद नोशन का है आइकॉन है, बट इट इज इन मीडियम, फाइन। ओके, व्हाट टाइप ऑफ डेटा साइंस, बिग डेटा एंड डेटा साइंस प्रोसेसेस आर देयर। Okay, the origin of R, okay, not this one. What type of data science? I think, yeah, this one. Here we'll find. To compare to data analysis, hypothesis generation, hypothesis confirmation, descriptive analysis, exploratory analysis. These are the type of descriptive analysis का decision and example, summary भी दिया हुआ है। exploratory analysis का goal क्या है, objective क्या है, description and summary. So type of analysis and its example also given here. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जा रहा हूँ। Let's say give me a second, just adding this note, type of analysis, type of analysis। तो यहाँ पे मेरे को type of analysis मिल जा रहा है। enough, go to my notes and here nothing but आपको पूरी this entire thing also will get guys। यहाँ पे नहीं आते हैं, go to this one, sorry, this one here, the type of analysis। Okay, we'll customize this and delete this all spaces and all, no need to worry। type of analysis is this, fine। Now next part is, okay, we have some examples also, किस type का analysis होता है। descriptive analysis, what is the objective of it? Okay, describe the summary set of data. Description, which is this is the very first analysis performed, generate a simple summary about the sample and measurement of the data, common descriptive statistics, measures of central tendency, variability, frequency of data, example of the data. Take the COVID-19 statistics page on Google, for example. So these are like right away given, these examples are given, these are nothing but descriptive। I am just referring this part only कि क्या है। तो descriptive of summarize of data set, this is one aspect। exploratory data analysis, EDA, that is another part। another is inferential analysis, तो
डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटिव एनालिसिस क्या होता है? एग्जामिन दी एक्सप्लोर द डेटा एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विच वेर प्रीवियसली अननोन। दोनों को मैच करना। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, स्टोम में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का खरीदारी बिक्री बढ़ गया, फॉर एग्जांपल इवन इन इस काइंड ऑफ पैंडेमिक मास्क एंड सैनिटाइजर का सेल्स बढ़ गया। दैट इज वी कैन डू बाय एक्सप्लोरेटिव एनालिसिस। क्या क्या सेल बढ़ सकता है? we can predict, we can find out the relationship, we can confirm the relationship, or we can confirm the hypothesis, whatever हम लोग का assumption है, we can do with the help of exploratory analysis, EDA. Descriptive, explorative, fine, right? Now inferential, we are inferring कि इससे ये हो सकता है। use a small sample of data to infer about a large population। छोटा है, जैसे for example, to be honest, I have like I don't know what example given here, example कहाँ क्या idea infer me about the population of a large with a small sample in the intuitive। I'll tell you one very nice example is कि ये जो vaccine हुआ है, it is applied and trial on 1,000 people or X number of people, I'm just giving example number, okay, X number of people. Now based on that we are applying that same thing in x number or entire population, right? So this is how we did it, inferential analysis के basis में ये करा गया है, entire thing done based on inferential analysis. This is one example. Similarly, how do I say this, very good nice example coming in mind. आप shoes खरीदते हो, जो shoes है वो एक size को जो standardize किया गया है वो infer है कि आपका अगर 6 साइज है तो आपका इस साइज में इतना और मिलीमीटर और में भी अगर मैचिंग करता है, इतना अगर थ्रेशोल्ड रहता है, आप 6 साइज भी पहन सकते हो। 6 में ऐसा नहीं थी एग्जैक्टली सबका 6 साइज मैच होता है, राइट? इट इज अ थ्रेशोल्ड, इट इज अ थ्रेशोल्ड, उसमें मैच हो जाएगा। तो इन्फ्रेंशियल क्या गया है, अगर इतना साइज रखा जाए एक 6 साइज वाला शू का, तो दीज मेनी और इतना इतना वाला थ्रेशोल्ड भी पीपल पहन सकते हैं उसको। जस्ट थिंक, किसी का अगर 6.5 है, किसी का 6.45 है, हाउ कैन, उसका तो कोई साइज नहीं है ना, देन 7 और 8 है, ऐसा होता है, बट फिट हो जाता है, थ्रेशोल्ड रहता है, इन्फर किया गया है, उस तरह से प्रोडक्ट को बिल्ड किया गया। आई होप इट इज क्लियर गाइस, राइट? और भी बहुत सारा है, ओके। सो फॉर एग्जांपल एनी प्रोडक्ट जब भी डेवलप किया जाता है, इन्फ्रेंशियल किया जाता है, दैट्स व्हाट प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूजिंग हिस्टोरिकल, ओके, करेंट डेटा टू फाइंड ए पैटर्न टू मेक ए प्रेडिक्शन। ये तो बहुत सारा चीज बोल सकते, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स प्रिडिक्ट करके ही बोला जा रहा था वेब कब आएगा। देखो मैं एग्जांपल ये कोविड का ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि ये करंट है, आप भी रिलेट कर पाओगे इवन इन फ्यूचर। कोई भी चीज आ रहा प्रेडिक्ट हम लोग कर रहे हैं, ये आएगा, व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रीवियस डेटा, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा हम लोग बता सकते हैं ये होने वाला है, दिस इज गोइंग टू हैपन। हाउ वी प्रेडिक्ट वेदर? बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा, वी नो दैट इफ दीज आर द एल्टीट्यूड लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में अगर ये चेंजेस होंगे, देन देर विल बी रेन, देन देर विल बी प्रेडिक्शन ऑफ दैट, देर विल बी वेदर चेंजेस और दिस काइंड ऑफ स्टॉर्म में कम्स on, weather will be, monsoon will come, right? How do we do this? We predict analytics based on the previous historical data. एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, यूएस इलेक्शन या population topic for many prediction models are built in predict the winning candidate for 538, okay, 538 did a great 2016 election and forecast. So बता रहा कि based on previous historic data where population is inclined, which kind of needs are there, who they will vote, that comes on predictive analytics. Then casual analysis, what is it? Look for the casual नहीं है, causal analysis. कॉजल एनालिसिस क्या है? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, दोनों में कोई रिलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट, वी फिगर इट आउट, okay? So is there any effect of let's say, what kind of example given here? Challenges also given here, example is also given here. So you wanted to test out new drugs to improve in human strength and focus, and do that your performance randomized control trial for the drug to test the effect of the drug. You compare the sample of candidate for your new drug versus the candidate received more control with a few tests of the of on strength and overall focus and attention of the observer, how the drug affect the outcome. So this is nothing but it is only possible with the causal analysis.
दैट ये कॉज ये इफेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कॉज इफेक्ट है, राइट? रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, ये रिस्क है तो ये अगर अप्लाई किया जाए तो बेनिफिट मेरा ये है, तो उसके बेसिस में हम लोग कुछ अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट सिमिलर, दैट इज अनदर way of or sub part of cause and effect only. This benefit also part of cause and effect, because usme there are some input based on some intervention, we expect some kind of change, cause and effect, right? And in order to confirm that change, we already hypothesize that this will be the reason behind it, cause behind it, right? So that comes under cause and effect. Then challenges, we are all clear on this. Then mechanic, okay, mechanic, understand the exact changes in variable that leads to other changes in other variable. Okay, mechanics analysis, I was not aware. Okay, okay, mechanistic analysis. So if one changes happen, it's like a chain rule. If something I change here, give me a second. Yeah, if something changes somewhere, is it impacting some other variables? We can, or what is the connecting dots between one thing? If I change, what is the example given here? Many graduate level research and complex topic are suitable example, but to put in a simple manner, let's say an experiment is done to simulate safe and effective nuclear fusion of power to power the world. A mechanistic analysis of the study would entail, okay, precise balance of control and manipulative variables with highly accurate measures of both variable and the desired outcome. It's the in I will say, okay, it's this intricate and meticulous modus operandi, okay, which is called strategy. Modus operandi is nothing but strategy towards this big topic that allows for scientific breakthrough and acknowledge sorry, excuse me, a- an advancement of society. So these kind of, so यहाँ एक example दिया गया है कि न्यूक्लियर, अगर कोई let's say पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश करना है, what are the things I will, you know, in a chain rule I will do so that exactly that much energy it produced. On that kind of analysis if you do, so mechanistic analysis will be applicable there. I hope it is clear, guys. A very nice blog. I really wanted to like it. If there is option, I have to sign in. But this is recommended, guys. I'll share this link in the comment below, in the description, so that you can refer this as well, guys. I hope it is helpful. Thank you. We'll see in the next session what kind of topic we'll go into details is type of analysis I already highlighted, descriptive analysis, various details of descriptive analysis. This is also clear. Diagnostic analysis also there. See, name is only changing. We are diagnosing something. For example, some kind of diseases, right? So we apply diagnostic analysis. Predictive analytics I already highlighted. Predictive analysis clear. I hope it is clear. Predictive analysis use case and what type of use case we use, what type of use cases we apply that, right? So a very nice example I can give. Okay, so there is a option like for example, it's called analysis maturity model. Okay, let me search this. So I'm just highlighting this analytics maturity model. Okay, okay, so definitely, yeah, look at this, guys. Very, very important. Analytics maturity model. So analytics maturity model, what is analytics maturity model, guys? What is okay, I should have just click on that, but यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है. A common buzzword, or shall say the buzz phrase in certain most individual in technology world have heard on the point another. So similarly, analytic maturity model is how to evolve. What happened? We go for descriptive statistics. Why did it happen? Diagnostic statistics. What will happen? Predictive analytics. What should we do about that is prospective analytics. What's done I know is cognitive self-learning analysis. What don't I know is cognitive self-learning analysis. These all things are, this is a
maturity model of analysis guys. Similarly बहुत सारा यहाँ diagram था already. You can refer all the diagram. कुछ parameter may be changing but not massively it will change guys. Look at this, not massively it will change, not at all. Okay, so here I am just sharing this one only, this diagram. I will share this guys, this entire search I will share so that it will be helpful to you. Fair enough? Clear guys? Now this is clear. Sorry, this one. Okay. So once this is done, analytics maturity model, here I'm saving this also as analytics maturity model. Give me a second guys. Analytics. Okay, clear? So this is also clear. Now what else? What is next? Analytics maturity model is clear. Big data analytics, I'll go furthermore. I hope it is now clear. Why we now I can summarize why even required. All things now you're aware. Better, faster decision we can take in real time, and we can do all of these kind of analysis right away. I don't need to tell you that. Competitive advantage milta hai. If I apply big data analysis, we can get a competitive advantage over my clients, whoever will be there. Technology enable analytics, technology related enablement, whatever is required, that analytics we can do. Time sensitive decision we can make, because big data mein time bhi aata hai, that we can actually apply. That is also possible. We can also go for I'm just thinking loudly what else we can do, like yeah, like see see now think from that point, that characteristics, what wherever those characteristics are connecting, right there we can apply the big data analytics. Big data on top of, if we can apply these kind of analytics based on the context of the business, we can call it as big data analytics. As simple as that. I am just simplifying that so that you can relate these guys further. Now I will go into, in the next session I will talk about more like little bit, or the most frequent abbreviation we use in big data analytics guys. See you in the next session. Thanks.